हो गया मुझे अब तक अभी समझ में नहीं आया और हम लोग तो कुछ सब बायो मुश्किल आ रहा है इस केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ हाँ रहेगा तो किसे बोलेगा अभी एग्जांपल कोविड से बाहर निकले कुछ तो अच्छा हेलो ऊपर कर गया क्या हुआ बहुत अच्छी सी आवाज आई क्या गला बैठ गया Okay, I think we have completed the main reproductive part. Okay, to start with the next part, that is let's see now. Online student share हो रहा है? Yes, sir. बोल रहा था I think I started with the male reproductive part. Male reproductive में testis तो हो गया था. Let's start with the next part. That is female reproductive system. I think if I'm not wrong, last lecture में मैंने कहा था. I'm repeating again. Then here we will be going lot of things together. एक point आएगा जहाँ पे अपन दो तीन चीज overlap करके पढ़ेंगे. So if you are really paying attention, शायद आंसर आए. अगर आंसर राइट आया समझ में आएगा कि ध्यान दे रहे थे. करना expected आंसर है. So let's see how focused you are in terms of female reproductive system. Now, when I say female reproductive system, your book, I'm talking about your book, CBSE book. It says ovaries, oviducts, uterus, vagina. It is not explaining in terms of the lower part, vulva. Okay? But overall, there are this structure which are present: ovaries, oviducts, uterus, vagina, and vulva. 99 या 95% chances diagram draw करने के लिए आता है. And I said very clear, easy. आईने में खड़े रहना, imagine करना कि सर नहीं, कि टाइम पास करने के लिए दो हाथ में बॉल भी नहीं लेना. Okay? Achlan, your creative part comes over here. जब आईने में खड़े रहते हो ना, ऐसे, okay, you stand like this. Okay, अपना drawing का variety, एक ऐसा variety, ऐसा वैरायटी इतनी वैरायटी में मत ड्रॉ करके. दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ना एक्सपेक्टेड है चिल्ड्रन क्या फर्स्ट गो पे कैन नॉट हैव अ सिमेट्रिकल डायग्राम. एकदम ऐसा लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड सेम आएगा ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा. ओके, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा. फोलियो नहीं चलता, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ऐसा नहीं.
दूसरी चीज जो है ना, बेटर ऑप्शन इज टू फोल्ड द पेज एंड ड्रॉ. एग्जाम में आपका तो आंसर शीट होता है, you can fold the answer sheet, draw off side and पेंसिल का रिवर्स पकड़ के, कभी बोर्ड रब करते नहीं दिख, पहली बार देख रहे हो. Okay, now if you fold the page, draw on one side the diagram and then pencil का back side, I'm not talking about the pen pencil, but about the normal pencil, उसका back side पे just again trace it onto it, थोड़ा dark कर दो. Okay, थोड़ा अच्छा उसको घुमाओगे उसके ऊपर तो उसका imprint पीछे की तरफ आ जाता है. So you'll get when you open the page again, आपको दोनों तरफ आ जाएगा. Okay, वहां पे आपका डायग्राम इजीली ड्रॉ हो सकता है. थोड़ा भी उसका imprint आ गया, एटलीस्ट 90% प्रोपोर्शन में आ जाएगा. थोड़ा उंगली इधर उधर हो गया चलेगा, पर कम से कम ऐसा वैसा कुछ तो नहीं होगा. Am I clear? Okay. So now we will be starting from outer to inner side. हम नीचे से अंदर की तरफ मूव करेंगे in terms of explanation. Okay. So we go on with the first part, that is vulva. Anybody knows what is vulva? ना है इसके पहले ऊपर के टर्म्स में, नीचे का स्कूल में चैप्टर हुआ, चालू हुआ, हो गया. ओके ओके, तो vulva को पढ़ाया नहीं होगा. Then vulva is also referred as external genitalia. इनको बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं. अभी क्या करना है सर? ये वाले इसको ही बोल देना, नॉर्मल कैमरा. क्या करो वो तो पता है यार, भूल जाएगा सर. कैमरा स्विच, स्ट्रॉन्ग कैमरा ये दिखाई दे रहा है मैंने. Yes, sir. Now, vulva is also referred as external genitalia. Now, what is external genitalia? The reproductive part, which is not in terms of producing the ovum, etc., but it is just a supportive structure over there. So, इस part में children, this is what external genitalia, which is the female reproductive system on the outer side. The female reproductive system is made up of the covering, that is labia majora and labia minora. The opening is covered by a leaf-like structure, a fleshy leaf-like structure known as labia majora. Labia meaning leaf, majora matlab bigger size. So there is a bigger leaf, and inner to that there is a small leaf, which is known as labia minora. So diagrammatic form, children, this is the outer leaf, the bigger one. Inner to that is the smaller one, that is the opening. And within this opening is present the female reproductive opening and the urethral opening. Unlike the males में कितने opening होते हैं? Two ना? Urethral opening and anus. Female में 3. Urethral, vaginal and anus. Anus being the lower most part. The no addition the anus part, upper part. So now these two openings which are there. In that, the part where the labia majora and labia minora meets is point. Okay, इसको mons pubis कहते हैं, not required at your level. But the point where it meets, there is a raised structure inside. This raised structure is known as clitoris. Diagram में लिखा है देखो, clitoris. What is a clitoris? Clitoris is equivalent to the male penis. Okay? जैसे males में penis होता है, females में clitoris होता है. It is not actually the penis, but stimulation is resulting in direction of penis. Stimulation of clitoris brings about sexual arousal in female. That is what clitoris is all about. Now we go on to the inner part. So labia majora is the covering. Now internally, the main opening, vagina. Cancer diagram vagina what? This vagina, so if I draw this vagina like this is the opening.
The vagina is partially covered by a thin membrane. There is a very thin membrane covering the vagina, and this membrane is known as hymen. सुना है? हाँ या ना? hymen नहीं सुना है? सुना है? Okay. Also known as virgin knot. At least ये virgin सुना है? Normal use the word. English medium the word commonly used. Are you virgin? Have you lost your virginity? Then, so hymen also known as virgin knot. Now, it's basically a myth about this. Is if the virgin is ruptured, obviously during the sexual act. Now, I think yesterday only CBSE के book में वहाँ पे sexual act और what भी लिखा हुआ है word. Okay, so we are not using the word. I said very clearly that is sexual act, having sex. Okay, yeah, intercourse. निकल के बच्चे से intercourse. Okay, we are not using any of this offensive word. The best word used is technical term is coitus. So when a couple has a sex, they have a coitus. So coitus represents sexual act over. Then during the coitus, the penis has to move into the vagina. So it will rupture this membrane, and that is how the virginity is lost. ऐसे सोचा जाता है पुराने ज़माने. Not then what's the myth behind it is it actually the sign of virginity? No. Then this hymen can be ruptured by of the girls by physical exercise like swimming, cycling, athletics. बहुत सारी चीजों में this hymen can simply rupture and the virginity is not lost. पुराने जमाने में ये problem था. During if the couple has been married, okay, first night and they have a coitus, and if the husband don't find bleeding from the vaginal part because of the hymen getting ruptured. Now it's a thin membrane. So blood, it will rupture, they will be bound to offer some blood. Okay. Now, अगर blood नहीं आया, whatever reason could be, okay, husband उस जमाने में सोचता था, okay, लड़की किसी और के साथ मुंह काला करके आई, मेरे मत्थे मार, okay, and पुराने जमाने में we all know there were lots of beliefs, okay. हस्बैंड को लगा बाबा लड़की किसी और के साथ मुंह काला करके आई है, he used to desert the wife, leave the wife. The girl has two options. एक तो सुसाइड कमिट करना, because husband ने छोड़ा उस जमाने में. Second, if she doesn't do that, then she would be involved in human trafficking. I hope you understand human trafficking. कोई option बचता ही नहीं. है ना? आज की डेट में we all know hymen rupture is nothing to do with virginity. तुम में से कोई एक आध नमूना आगे जाके अगर अपने वाइफ को इसके लिए तलाक देने सोचेगा, तो 50 या 60 साल पहले लड़की रोती थी सुसाइड करके, उल्टा हो जाएगा. शी विल फर्स्ट स्लैप यू देन, जितने भी सैंडल्स उसके पास होंगे मार मार के पुलिस थाने तक लेके जाएगी, पुट अ लॉयर केस ऑन टू यू, बड़े आसानी से तुम्हें डिवोर्स देके एंजॉय करने बांध. एंड आई थिंक द गर्ल शुड डू दिस वन. अगर इस एज में मतलब इतने पढ़ने लिखने के बावजूद अगर ये बकवास से सोचता होगा ना, तो इसको मारना तो दूर की बात है और ये भी करना चाहिए. Am I clear? Everybody. So that's about the hymen part. All these structures are referred together as the vulva or external genital. So here it is given. Hymen does not mean the first time you have sex. It is because only physical exercise, etc., or certain diseases. So it is not the sign of virginity. Hymen break hua, so I have lost the virginity. ऐसे नहीं. Is it clear? Next. Next we move on to, now we go to the internal part. So I hope मैंने ये diagram सिर्फ half दिया for your understanding, but आपको पूरा diagram पता है, visualize किया. So now as we move internal to part over here, you can see this part. This was the vulva part, lower mush part. Now as I move inside, the long part, which is known as vagina. What is vagina?
Vagina acts as a birth canal. Birth canal, it is through this opening the child emerges out. So it acts as a birth canal. It is this part which receives the male copulatory organ. What is it? Penis. So penis fits into this vagina and it would ejaculate the sperm out. That is the semen out. So this is what is in terms of your vagina. Without a now, as you know, internal to the vagina, then opens a huge part known as uterus. Then vagina or uterus के बीच में there is a small neck-like structure. So it is something like मतलब ये ऐसे होता है. And ये आपका vagina, ये आपका uterus. इन दोनों के बीच में small part known as cervix. A cervix which then आपके लिए नहीं है, but there you can see internal OS and external OS. Internal orifice and external orifice कहा जाता है. They are the openings, so these are the two openings. ये वाला और ये वाला. Now, cervix का कोई function नहीं होता. Cervix just a passage through which the sperm stream into the uterus part. Then इसका significant function reproductive part. But it is the cervix which is more commonly affected due to any viral infection, bacterial infection, etc. And that is where cervical cancer in the female. So cervical ये नहीं. Okay, cervical cancer, cervical cancer is this. Females may after mammary gland cancer. This is also the number one in terms of cervical cancer. Is it clear, everybody? Now, from there, the sperms move into the inverted pear-shaped structure. So you can see this part. एक तरह का pear है, मतलब अपन pear से ड्रॉ करते हैं इसे. एक inverted type में आता है. It's an inverted pear structure, which is a highly muscular bag known as uterus. Now, what is the significance of the uterus? क्या function करता है? Sperm. तो sperm कैसे holds? Holds the baby. So what is it doing? It provides a suitable environment for the growth of the embryo, fetus, embryo, whatever. So एक function है. It is this part where it provides suitable, conducive environment for the growth of the embryo. Am I clear? Now, चल uterus का थोड़ा detail पढ़ना है हमें समझना. Uterus is an inverted pear structure, highly muscular in nature. अगर मैं dimension देखूं तो चलन ये almost 8 centimeter by 5-6 centimeter के आसपास. या 10 या 8 by कुछ होता है. चल भले आप उसको 10 by 6 पकड़ा, 10 by 8 भी पकड़ो. 10 centimeter हुआ कितना इतना और 5 centimeter कितना सा. मतलब इतने से uterus में we are present as a baby. Okay? जब हम पैदा होते हैं अपनी साइज कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर. एटलीस्ट इतनी तो होती है. Okay? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो होती है. Okay? ना चलन इमेजिन एक ही बच्चा अगर 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 होंगे तो expand होगा. Then reason is the uterus wall is made up of 3 layers. The innermost layer is endometrium. सबसे अंदर का जो लेयर है वो है endometrium. So if I take again diagrammatic form, ये uterus का part है. तो innermost जो wall है ये वाला, ये हुआ endometrium. Okay, what is endometrium made up of? Made up of epithelial tissues. 9th standard tissue chapter, cuboidal, columnar, epithelium. So यहाँ पे epithelial tissues है, mucus layer and blood vessels are. Second layer is the middle layer, the most developed layer. Myometrium. Diagram में स्पेलिंग लिखा हुआ है myometrium. Myo का मतलब होता है muscles, muscular layer. So this layer
is the most significant. It can expand 100 times and इसीलिए the mummy can hold the baby in its womb. चाहे वो 1 हो चाहे वो 12 हो. Okay, because that expansion is maximum. हम सोच नहीं सकते इससे ज़्यादा expansion. Okay, so it is not like 4-5 बच्चे के बाद वूम फट जाएगा. Okay, so that's because of the myomatch. And the outermost layer is known as perimetrium, connective tissue, basically supportive in nature. So it's the 3 layers which the uterus is made up of. कोई doubt है? Okay, आगे अपन uterus के ऊपर focus करेंगे. So it is at the uterus point. It is at the uterus point where the embedment takes place or the fetus growth takes place. Now, uterus, as we move inwards, it continues on the top side, right and left side, to form the tube-like structure. What is the tube known as? What is the tube known as? Ovidum, also known as fallopian tube. You can see on top, fallopian tube or ovidum. This ovidum, fallopian tube or ovidum, is further divided into 3 zones. अपने लिए नहीं है, ये ampulla, isthmus and fibula are required for us in fundibulum. But अपने काम का जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है. The tube-like structure at the end towards the ovary. So end इधर का है, end इधर का है. इसको uterus end बोलेंगे, इसको ovary end. So towards the ovary, the fallopian tube forms funnel-shaped structure. You can see over there. Funnel है, and the funnel is lined by finger-like projections known as fimbriae. Now, what is the function of fallopian tube? Transport of पहला स्पर्म जाता है या पहला ओवम जाएगा? अपन प्लांट पढ़ रहे हैं एनिमल पढ़ रहे हैं? Ovum. Then function of fallopian tube is only one. First function is it transfers the ovum from the ovary towards the uterus. Okay. हाँ, उस केस में उल्टा it can allow the sperm to move upwards. But then sperm is going because of its motility. Ovum is pushed because of the fallopian. Ovum is non-motile, but sperm is motile. So ovum जब move करता है, how does it move? The fallopian tube inner line, again not required, but again for just knowledge. So 9th standard tissue chapter में अपन ने epithelial tissues के type पढ़े थे. Ciliated columnar epithelium. Wherever cilia is present, it is a certain movement. चाहे वो ट्रकिया हो, चाहे वो यूट्राइन हो, चाहे वो आपका नेफ्रॉन हो, तो यहाँ पे भी same. The inner lining is lined by the ciliated columnar epithelium. So when the cilia fits like this, एक direction में से bit कर. So if there is an egg over here, egg will be pushed on this side. So the beating would be obviously in this direction. So it pushes the egg towards the uterus. Am I clear to everybody? समझ में आया? Now, what would be the function of the oviductal funnel? से oviductal funnel लिखा जाता है, and the finger-like portion known as fimbriae. Imagine ना, ऐसा है वो, और hand is like this ना, ये आपका funnel होगा और ये finger होगा, ऐसा क्या है? Function क्या करता होगा? Then it is basically to absorb the ovum. Okay, it gives the bigger space ताकि ovum इधर उधर भटके ना. Okay, it cannot go here, sir. By chance इधर उधर. Okay, अपना स्कूल का स्टूडेंट नहीं क्या? मैम, can I go to washroom? तो washroom के नाम पे पूरा स्कूल घूम के आना है. Okay, और इधर उधर जा सकते. ovum टाइम पास करने के लिए इधर उधर नहीं जाएगा. The moment the ovum is released in this vicinity, ये एक तरह का वैक्यूम की तरह काम करता है. So it will take it inside. Or how it is guided? The fimbriae. So the function of fimbriae, it guides the fallopian, right? It guides the ovum inside the fallopian and out.
Okay. Next. अब चिल्ड्रन सबसे इम्पोर्टेंट और यहाँ से अपना बहुत क्विक स्टार्ट हो जाएगा पढ़ने is a pair of ovaries. Again, ovoid pinkish color structure present flanking towards the fallopian tube, but not hanging. So the ovaries are attached to the uterine wall by a ligament. इसे ovarian ligament कहा जाता है. The proper term में mesorchium कहा जाता है. Again, दोनों required नहीं है आपको, so leave it. But ऐसा नहीं है कि हवे में जादू और वो सब घूम रहा है. It is there and that is attached into the part of the uterine wall. So यहाँ पे से ligament भी है. Actually ligament भी नहीं होता है. It is like this. अगर आपका ये fallopian tube part है and this is the ये आपका ovary. So this ovary इसके आप एक सब fold होते हैं. A very thin membrane structure which is attached over here as well as over here. सब पूरा cover होता है thin layer का which is holding the ovary to the uterine wall and the fallopian tube. That known as mesorchium or ovarian ligament. So ovary ऐसे हवे में it is attached to the uterine wall. Now, what is the function of ovary? Okay. The ovary is not directly attached to the or directly after attached. So it will be like this. Okay. Functioning might be affected. Just the logic to because the ovary keeps on bursting. Okay. Enzymes के function हो रहे हैं. So maybe that is why it is not. पर अगर कुछ problem हुआ पूरा affect हो सकता है. यहाँ पे ovary affect हुआ ovary को निकालना ये तो बचा है. So there might be God is wonderful creator. Not even यहाँ पे. What is the function of ovary? Or good. Then testis के दो function थे. To produce sperms and the male hormones. Ovaries के दो function. To produce the ovum and the progesterone and estrogen. So then vagina, this is male copulative organ, cervix narrow opening. Uterus provides a environment for the growth of the embryo. यहाँ पर already discuss कर लिया. The fallopian tube, 4 part of the fallopian tube, the fimbriae, infundibulum, ampulla, isthmus. Again, not required since ICSE में आपके नहीं. But just for our the ampulla and infundibulum के junction. You can see over here. ये part जो है isthmus है, ampulla है, infundibulum. Somewhere between infundibulum and ampulla के junction पे majority of time the fertilization takes place. You can see the ovarian ligament. अच्छा ये है fold of slightly yellowish color. वैसे नहीं कि यहाँ पे gap है. There is a fold of skin. Mesorchium में आता है which is holding the ovary towards the uterus part as well as the fallopian. Structure of ovary. आपके book में नहीं दिया होगा. Then do we need to learn this? Yes. अगर prime आपको menstrual cycle समझना है तो ये समझना है important. We do not have to go in details of all this. Okay? हमें सिर्फ 3 या 4 words होते हैं जो हमारे लिए important. You can see the entire structure. ये है पूरा ovary का. Now the cells which are forming the main part are referred as germinal epithelium. You can see the outermost lining. This part. अगर ये ovary है तो ovary के सबसे बाहर की lining में there are small cells which are referred as germinal epithelium. And this germinal epithelium slowly and gradually gives rise to primordial follicles. You can see small round structures. Okay. Now, what are these primordial follicles?
So when is egg produced in the females? कौन से egg produce होता है? Ovaries. मैंने where नहीं पूछा, when पूछा, when. At what stage of life a girl produces the egg? ये लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था शायद. चलो वापस डिस्कस. At what stage of the life do male produces sperms? At what stage of the life the sperms are stopped? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें आंसर करना है. गुड. मैं फिलहाल मेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ. वही बोल रहा हूँ, नहीं होता ना, सिंपल है, नहीं होता. Okay. So man में basically starts with puberty and at nowhere. मरने के साथ ही. Okay. इसलिए बोलते ना मर्द कोई बुढ़ा नहीं होता. Okay. He continues to produce sperms till his last. Quantity and quality would differ, but he will produce this. Why question? When is the female producing the egg? Puberty. And when it will stop? 45. So what is that stage? So menopause. Menopause. So what is the first when the egg is produced? Menarche. Right interest. Good. Okay, but wrong. Okay. Rare idea. That one's a wrong one. कुछ और बोलो. Sir, सबसे पहली चीज, the eggs which are there in the females. Females में होता है fetal life. In the fetus, when you three were in your mother's womb, अब अपने मम्मी के जो womb में थे, when you were in the embryonic stage, 4 or 5 months. तब, so 4 or 5 months, egg production start हुआ. Okay? 4 या 5 months से लेके the time you were born, birth, जिस दिन आप पैदा हो, लड़की जब पैदा हो जाती है, this production stops. इस 4-5 महीने के गैप में 4-5 months मान के चलते हैं कि बाबा लड़की ने पूरा 9 months मम्मी के मुंह में कंप्लीट किया. So 4 या 5 month में there are million of eggs produced. So इनको eggs नहीं बोलते, they are referred as primordial follicles. Primordial cells of gemins जो पहले से बन गया. कब बनते ये? fetal life. Birth में क्या होता है? Stop. अब no more cells would be added in her ovaries. अब birth से लेके puberty तक many lakhs degenerate. इतना जरूरी नहीं है, it's a genetical. जैसे सर मैं बनाई और वो बना and then genetically it was not required. So your body is genetically prepared in such a way कि वो lakh million में से lakhs and lakhs of eggs gets degenerate. Reason? अगर वो degenerate नहीं होंगे तो millions of cells will be there. The ovary will become bulky. Closely with the PCOD, PCOS now, polycystic ovary syndrome, polycystic ovary disease वगैरह, तो उनके अपने problems होते हैं. So you will be more facing that problem. So एक nature है. दूसरा सोचो, there are millions of numbers of egg produced in the baby, in the baby. Okay, उसके बाद degenerate नहीं हुआ, सीधा puberty में आए. Okay, अब अपन वो बाद में देखते नहीं हुआ तो. अब स्टूडेंट कितने बच्चे नॉर्मल केस में डिजेनरेट हो तो
there will be few thousands of egg remain in the puberty. Puberty में कुछ thousands बचे, 40, 50 जो भी thousand होंगे वो. Then each month puberty से क्या चालू हो जाता है? The menstrual cycle. जब menstrual cycle चालू हो जाता है, what happens? Every month ये एक लाइन जो है वो month का है. Every month, out of the thousands, some few starts developing. Okay? मान लो इस मंथ में 500, नेक्स्ट मंथ में 500, मैं फिगर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है 500, पर 500, 500, 500, 500, 500, so एक टाइम आ जाएगा कहीं ये जो नंबर था वो कम 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 होगा, एक पॉइंट आएगा ना, तो जीरो जाएगा. व्हाट इज दैट पॉइंट? Children, why menopause differs in everybody? Because simple है ना, in the number same in everybody. उसका प्रोडक्शन कब चालू हुआ उसके हिसाब से नंबर वेरी करेगा. डिजेनरेशन नंबर भी अलग होगा, प्यूबर्टी का टाइम अलग होगा हर गर्ल में. उसके बाद हर साइकिल में नंबर ऑफ एक्स गोइंग इनटू डेवलपमेंट वुड बी डिफर. तो लड़कियों का मेनोपॉज नॉट कांस्टेंट ना, क्या उसको 45 में आना मुझको भी 45 में आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं. सो दैट इज हाउ द मेनोपॉज कम्स, बिकॉज़ these are known as reserve eggs. जैसे रिजर्व एक्ट खत्म हो जाएंगे, इन पूरे पार्ट को रिजर्व एक्ट बोलते हैं ना अपन. जब रिजर्वेशन खत्म हो जाता है कुछ नहीं बचा तो मेनोपॉज आ जाएगा. अब चिल्ड्रन सोचो, व्हाट इज द नॉर्मल मेनोपॉज एज? 45 50 के आसपास आता है. चिल्ड्रन सोचो अगर डिजेनरेशन नहीं होता, मिलियंस एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स, और शायद नंबर खत्म ही नहीं होता तब तक वो ऊपर चली नहीं जाती. और फिर तो इंडियंस हैं हम तो हमारे सो the lady would be just a factory to produce the child. 70-80 साल की बुढ़ी होगी अभी बच्चा पैदा होता है, because the message never stopped. अभी भी 40 मतलब number of eggs are there, so it's a nature's way to reduce the population. अगर ये नंबर कम नहीं होता ना तो अपने तो आते ही जाते, घर का चिराग, दिया, हेलोजन, ट्यूबलाइट, सीएफएल, एलईडी, इंडिया में कुछ ज्यादा ही जरूरत होती है. Okay, that is where the menopause comes into picture. Am I clear? So next time if anybody asks you when is egg produced in the females, so it is not puberty, it is fetal. They are stopped during the birth. They only further grow after puberty. And they would come to exhaust a stage known as menopause. समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? Now you can understand the ovary part. Okay? अच्छा ovary में outer layer जमाना क्यों? अब ये जो primordial follicle है, can you see this diagram में ये कॉर्नर पे दिया हुआ है? ये कौन सा है? ये वाले पार्ट. मैंने डिजेनरेट हो गए, एक बर्थ होने के बाद, डिजेनरेट होने के बाद तो बच्चे कुछ है, that is thousands. Every month they will undergo further development. सबके सब जाएंगे एक साथ नहीं, 1000 में से कुछ. Then there are 500 people running in a race. What is the probability of a winner? Okay, Bachman, is it possible दो आ सकते हैं winner? 3 4 500 के 500. ये बहुत कम है ना, बहुत ही रेयर. 3 4 5 500 में से 10 12 साथ में आना, एक पॉसिबिलिटी ना कम होती जाएगी, पर होने के चांसेस होते हैं एग्जैक्टली सेम चीज. वो जो thousands of egg बचे हैं, some of the eggs, some of the primordial follicles, not all, तो अपन एक नंबर देते कितना, 100. So एक 100 का ग्रुप आगे बढ़ा इधर into the growth phase, तो आगे वो ग्रो हो रहा है. अब वो ग्रो क्या हो रहा है? You can see over there, primary follicles, secondary follicle, primary follicle देखा, primordial, primary थोड़ा बड़ा होगा साइज में, फिर मल्टीप्लिकेशन साइज थोड़ा बड़ा होगा.
प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, थोड़ा और बड़ा हो। सेकेंडरी फॉलिकल जब होता है, you can see there is a small gap created. You see this part? ऐसा बीच में और सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में ऐसे दिया हुआ, यहाँ पे गैप दिया हुआ। नेक्स्ट में दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Okay. अजलन, this gap सेकेंडरी बन गया और सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा और बड़ा होगा। What is second next follicle? देखो वहाँ पे क्या लिखा है। सेकेंडरी के बाद चिल्ड्रन, this forms a third follicle, जिसको टर्शियरी या टेक्निकली प्रॉपर वर्ड ग्राफियन फॉलिकल। हमारे सिलेबस में ये वर्ड है, you should know the largest follicle is known as ग्राफियन फॉलिकल। स्पेलिंग अगेन डिफर करेगा, कई बुक्स में GRA डबल FI है, कई बुक्स में GR डबल है दिया। चल कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, नहीं मैं तो इट कैन वेरी, बट दिस इज द लास्ट स्टेज, ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, ग्राफियन फॉलिकल में द कैविटी आल्सो बिकम्स वेरी लार्ज, और इसके बीच में आपका साइड लिखा हुआ है, लिखा। Do we need to learn everything? No. हमें क्या याद रखना है? Within the ovary, there are primordial follicles. They undergo development during each menstrual phase, forming primary, secondary, ग्राफियन फॉलिकल। चल, अब सिंपल है, रेस था कितने भागे? 100 में से प्राइमरी तक पहुंचने वाले शायद 10 होंगे, आगे बीच में डिजेनरेट हो गए। 10 में सेकेंडरी पहुंचने वाले शायद 4 या 5 हो, इसमें से ग्राफियन फॉलिकल में पहुंचने वाले शायद 1 या 2, या अपन यहाँ पे ऑन एवरेज 1 होते। इज इट क्लियर? अब ये सबसे लास्ट फॉलिकल, इसके बाद क्या? आफ्टर दिस स्टेज इट कैन नॉट फर्दर ग्रो, so it is simply burst. ठीक, जिस दिन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ऐसे that point where it ruptures, it is known as ovulation या ovulatory day या ovulation day, ovulatory phase, आपको जो बोलना है वो। अंडा खाते हो? आप में लिए कितना टाइम लगता है फोड़ने में? टाइम सेकेंड्स। कहने से सर अंडा फोड़ने के लिए दिन लगता है। सर आई कैन टेल यू, आई ब्रोक द अंडे ऑन वेडनेसडे में पूरे दिन में कहीं भी मिल किया एग्जैक्ट है। हम इसको ओव्यूलेटरी डे, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज जो भी बोले, the entire day process, it's a fraction of second. Fraction of second में बर्थ हो गया, ovulation is complete. Ovulation के लिए ovulation day हो। Am I clear? Everybody? Now, चल ovulation में क्या बाहर निकलेगा? Good. वहाँ पे लिखा है ovulated oocyte. इसके अंदर होता है is a fluid filled cavity. ये जो कैविटी थी ना उसमें फ्लूइड है, इसको एंट्रम बोला है, ये नहीं है रोन वर्ड। there is a fluid filled cavity, अपने लिए फिलहाल इतना, there is a yellowish color fluid within over here, so इसमें से ओवम बाहर निकला, बचा क्या? outer covering and that fluid. Then the moment the egg is released, this yellowish color mass fluid along with the shell again regresses, closes in, फुट के पॉसिबल होता है और एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है, फॉर्मिंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अपने लिए पूरे फिलोसॉफी में ये एक तरह का द मेन डिक्शनरी की तरह, तो अपन सब कुछ बोला चलेगा, ये वर्ड नहीं बोलेंगे। द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू फॉर्म कॉर्पस
developing corpus luteum. Corpus luteum. What is the color given? Yellow. So corpus luteum is nothing but having yellowish color fluid filled into it. जहाँ तक किसी को doubt है, shall I go ahead? Okay, you would repeat again. You would help me now. Sir, ये लिखते हैं किसको? आगे बढ़ो. So you would help me. सबसे पहला कौन सा सेल था? Primordial follicles. उसके बाद किस तरह रहे हो? Primary follicles. उसके बाद secondary follicles. उसके बाद Graafian follicles. उसके बाद corpus luteum. corpus Graafian follicle क्या रिलीज करता है? अपने लिए फिलहाल चिल्ड्रन हो. Okay? Now, then इस साल अपन सुनते हैं, हर साल अपन सुनते हैं. Other 7th 8th कभी भी पढ़ा होगा. What is the function of ovary? It releases the ovum. अगले साल अगर मुझे बैठ के साइंस देंगे, बाय तो और एक नया झटका है. The ovary never releases the ovum. Okay? It releases secondary oocyte. चल ये अभी ओवम नहीं बना है. ओवम जब स्पर्म एंटर करता है तब बना. तो उसका अपना लॉजिक है. तो अब ये पढ़ेंगे अगले वीडियो. तो यह कॉर्पस लूटियम. अब कॉर्पस लूटियम, व्हाट इज द कलर? Yellow color mass. Okay. Now this yellow color mass secretes a hormone known as progesterone. Control and coordination. पढ़ा था. What is the function of progesterone? Very good. Secondary sexual characteristics in female. Corpus luteum progesterone secrete करता है. Control and coordination में पढ़ा था. What are the hormones secreted by ovaries? So the developing follicles produce the hormone estrogen, and corpus luteum produces the hormone progesterone. Estrogen helps in the formation of Graafian follicle and this part, ovulation part, whereas progesterone helps in the maintenance of pregnancy. Uterine wall को intact रखने का नाम आपका progesterone. The moment progesterone level falls down, किसी भी वक्त अगर progesterone level कम हुआ, uterine wall will break and menstrual cycle would start. Is it clear, everybody? आगे बढ़ो. Yes, sir. Okay. Now children, we come to the part corpus luteum. Corpus luteum के बाद थोड़ा सुनते हैं. Corpus luteum is exactly like a moon. देखा है ना moon? Moon में क्या होता है? Shape के हिसाब से. It keeps on full moon से लेके और फिर one day गायब. No moon. Okay? And corpus luteum में moon ही है. Corpus luteum full moon है. Okay? जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, ठीक है. तो अब वो मून की तरह बड़ा था, बनते हो, फिर धीरे 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 कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और एक दिन 6 कार बचेगा और गायब हो जाएगा. तो प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या होगा? So it was keeps on decreasing in. इससे प्रोजेस्टेरोन लेवल धीरे 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 कम होगा. एक पॉइंट का बहुत कम हो गया. That is where the next menstrual cycle start. तो menstrual cycle monthly होती है ना, वो इसी के वजह से. अब प्रेगनेंसी रही तो ये इसको स्टॉप करेगा.
कंटिन्यूस। वो आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को डाउट? श्योर? सब इधर फॉलिकल्स का पार्ट आती है। मतलब cause of the fate of the egg inside the मतलब egg release जो हुआ उसके अपने दो ऑप्शंस हैं। एक ovulation release of ovum once in 28 days। menstrual cycle कितने दिन का होता है? 5 to sure स्कूल में हुआ ना? Then as a girl you should definitely know menstrual cycle is for 28 days। menstrual phase जिसे अपन menses कहते हैं that lasts for about 5 to 7 days। cycle is for 20 days। तो हर एक साइकिल में एक बार तो रिलीज होगा। that is what it means। यूट्रस गेट प्रिपेयर टू नरिश एम्ब्रियो। अब हर साइकिल में यूट्रस क्या करेगा? प्रिपरेशन। घर पे अपने मेहमान आने वाले हैं, अपन क्या करते हैं? जमाते हैं सब हाँ ओके, मतलब इन शॉर्ट क्या अपन सब कुछ साफ सफाई करते हैं, सब कुछ जगह पे आता है, वरना वो कुछ लगे एटलीस्ट वो 2 दिन तो कम से कम दिखना चाहिए घर। वो चले गए फिर वापस कर रहे हैं, और कम से कम मेहमान को बोलने मेरा बेटा कितना अच्छा लगता है। सो एवरीथिंग इज, और अगर हुआ भी नहीं सब कम की तो राजी रहेगा। तो एक बार क्या एग्जैक्टली सेम। ओके, अब द एग वुड बी रिलीज, वो तो ओवन पे रिलीज होगा, ओवन से रिलीज होगा। यूट्रस इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, यूट्रस विल बिकम थिक एक्सपेक्टिंग कि बाबा फर्टिलाइजेशन होगा और मेरे में वो एम्बेड होगा। सो वो खुशी के मारे अपन ना घर पे 2 साल के बाद मेरा कोई रियल कजिन आ रहा है तो अपन उसके घर एकदम चकाचक पूरा सब कोई उसके सब उसका मनपसंद ये वो सब कुछ लास्ट में उनको फोन किया मैं नहीं आ रहा हूँ, गुस्सा आएगा। एग्जैक्टली सेम थिंग। व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्बेडमेंट होगा, पर अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन, अगर हुआ तो क्लियर। अपन साइकिल मेनोपॉज इस पे नहीं आएंगे। अपन पहला इस पे जान लेंगे। अब यहाँ पे ओवरलैप जिस करो, फॉर दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी बुक में दिया होगा। I wanted to open your volumes। ओवरी कंप्लीट कर लिया, फंक्शन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फिर प्लासेंटा और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिला। ओके, चलो अब अपने पास 2 ही पार्ट बचे, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुअल cycle। So we go on with the part that is in terms of first is in terms of this part, okay, menstrual cycle। Good, at least भगवान ने मुझे जब बोलोगे तो मुझे यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, आप बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का था? अपन ड्रॉ कर रहे हैं 28 days, 1 से लेके 28 days। When does the cycle start? कैसे पता चलेगा? फीमेल में साइकिल चार्ट को कैसे पता चलेगा? By the onset of menses। When the menses start, जैसे अपन normally periods होते हैं। So when the period starts or menses starts, there is what happens? 2 events occur. Uterine events, diagram you can see here also, एक uterine events है और एक follicle event, मतलब ovarian events। Actually, uterus में क्या हो रहा है? Uterus was expected to have the embedment, but was there fertilization taking place? No. So uterus और जो peak हुआ था, वो क्या होगा? Rupture। तो ये जो part है वो rupture दिखाई दे रहा है आपको। So this is the designer part और rupture कैसे? Okay.
Now, how much days the bleeding takes place in the female? Approximately 5 days. 5 to 7, 3, 4, 5 days के हिसाब से on an average we say it as 5 days. So 5 दिन तक यूट्रस वॉल ब्रेक हुआ. कौन सा पार्ट? जो expand हुआ था, जो enlarge हुआ था, expecting that there would be fertilization taking place. So the uterus myometrium, endometrium is thickened so that it would nourish the baby. हुआ क्या baby? नहीं, तो ब्रेक हो गया. अब 5 दिन तक ब्रेक हुआ. So what is sin? Menses is sin. तो इसके लिए इसको कहा जाता है menstrual phase. कितने दिन का ये? 5. After 5 days, cycle gets over. What will the body do? Again recovery mode पे जाएगा. You can see over there. The uterine wall is starting again growing. एकदम साइन नहीं कर. यहाँ पे यूट्रस वॉल वापस रीबिल्ड कर दिया. For what purpose? Again expecting वापस मेंबर आएगा. Okay? तो again there could be a next fertilization taking place. तो इसके लिए वो रीग्रो कर. अच्छा ये तो यूट्रस का पार्ट हुआ. अब ओवरी में क्या हो रहा है? ओवरी में जहाँ पे आपका मेंसेस चालू होता है फर्स्ट डे, उसी टाइम पे द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स स्टार्ट फॉर द डेवलपमेंट. क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल, somewhere in the mid cycle. 14 डे के आसपास क्या बन जाता है? ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है. यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है? फॉलिकल. यहाँ पे क्या हो रहा है? मेंसेस हो रहा है. थोड़ा में सिग्निफिकेंटली क्या दिखाई दे रहा है? मेंसेस. इसलिए फर्स्ट 5 डे में पहले फॉलिकल डेवलपमेंट तो हो रहा है फर्स्ट 5 डे में. And more prominent in is menses. इसके लिए तो menstrual phase का है. But next 5 to 14 days में वहाँ पे क्या हो रहा है? इधर कुछ भी नहीं हो रहा है. सिर्फ यूट्रस वॉल बन रहा है. And major thing is occurring in this follicle development. इसलिए next phase is known as follicular phase. What is happening in follicular phase? The follicles are undergoing growth and development. कब तक होगा growth and development? Till it forms a ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल कब बनेगा? Approximately 13-14 days. Children, again, this is all approx. ऐसा एकदम डे टू डे नहीं होता, आगे पीछे होता ही है. अपन 13-14 डे के आसपास. अब 14 डे के मान लो अपना ग्राफियन फॉलिकल बन गया और उसी टाइम पे इट सिंपली रप्चर्स. अपन ने कहा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स. सो व्हाट इज दैट डे नोन एज? ओव्यूलेशन डे. सो इस फेज को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज. इज इट ओव्यूलेशन डे? एक्चुअली नो, इट्स अ सेकंड. how many second टाइम ब्रेक हो गया? तो अपने लिए ओव्यूलेशन डे. am I clear? ओव्यूलेटरी फेज. अब ओव्यूलेटरी फेज यूट्रस का वॉल ठीक है अपने के लिए, उसको मतलब ही नहीं. अपने यहाँ पे ध्यान यही है, हम ऊपर ध्यान है. ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया. यहाँ पे क्या यूज होगा? ओ, अब क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है यहाँ पे ड्रॉ किया ना. व्हाट हैपेंस टू कॉर्पस ल्यूटियम? इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरोन. सो यू कैन सी द डायग्राम. प्रोजेस्टेरोन लेवल पहले कम था, सडनली इट इंक्रीजेस. यहाँ से वो ज्यादा हो गया, फिर यहाँ से इंक्रीज हो. ठीक. सो प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ना. कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे श्रिंक होगा. ये 27 के आसपास हो यहाँ पे. चलिए यहाँ पे ऐसे 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 कम होते जा रहे हैं. यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या था? हाई था. इस पॉइंट पे हाई था और ये धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होते जाए. इस पॉइंट पे प्रोजेस्टेरोन लेवल इज बिलो द नॉर्मल लेवल. कैन सी ओवर हियर. ये वापस नॉर्मल लेवल के नीचे आ रहा है. Okay? The moment the progesterone level comes down, what will be the signal? The uterine wall to contract heavily.
जैसे यहाँ पे 20 डे के आसपास यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा, बहुत जनरल देखा होगा ना गर्ल्स स्पेसिफिकली, क्या जस्ट बिफोर द मेंसेस देयर इज अ प्री एब्डोमिनल पेन। मेंसेस आने के पहले एब्डोमिनल पेन होता है, रीजन द प्रोजेस्टेरोन लेवल हैज गॉन डाउन, उसके वजह से द वॉल स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, तो वो बहुत ज्यादा स्क्वीज होता है लाइक दिस, ताकि उसको हिला, मतलब वो बैम्बूज वगैरह टाई करते हैं पेंटिंग के लिए, तो पूरा नहीं खोलते, जस्ट दे कीप ऑन शेकिंग इट ताकि वो लूज हो जाए तो फिर आसानी से निकले। यहाँ पे भी सेम है, बिकॉज यूट्राइन वॉल इज हेवीली कॉन्ट्रैक्टिंग, वहां पे पेन हुआ एंड slowly it will pressure and it will further break down. 29 day पे क्या होगा? A new cycle start. Again, I said all these are plus minus. So जरूरी नहीं कि 29 पे आ गए, कभी कभी एक हाथ दो आगे पीछे हो सकता है। कोई डाउट है? हाँ, नॉर्मल लेवल, इट विल बी बिलो द नॉर्मल लेवल। प्रोजेस्टेरोन हमेशा होगा तो वो नॉर्मल है। व्हेन इट अंडरगोज ओवुलेशन, कुछ टाइम पे वापस का सबसेट करके एक हाई लेवल पे जाएगा और फिर वापस कम होगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, बढ़ना कॉर्पस नहीं होगा। लेक्चर एंड्स एट 6:20, ऑलमोस्ट आई थिंक टाइम अप हो गया, 2 मिनट। Then I cannot go further because इसके आगे बढ़ूंगा तो होगा नहीं। अच्छा, I want you to even remember tomorrow I think I have a lecture now. Okay, good, but presentation में होगा तो जल्दी भी आ रहा है। So once you completed this part, now we go on to the post fertilization part. Okay, अगर post fertilization पे जाऊंगा, fertilization पे जाऊंगा, तो ये correlate करेंगे क्या प्रोजेस्टेरोन का उसके फंक्शंस के साथ कैसे काम करता है, and then we'll come to understand how the entire system works. Am I clear? Everybody? Okay. कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो। Smart. Yeah. Offline में online children we can exit and your exit is Yes, very good. चलो bye. Thanks.